Hello everyone, welcome to FrenchPro Global. So I want your confirmation. Are you there? So if you are there, you write hi, hello, or bonjour, something like that. All right. So most of you are there. So I now got the confirmation from you. Okay. Bonsoir, bonsoir tout le monde. My voice is clear. Please confirm. Am I audible? My voice is clear. All right. Fine, 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 fine. All right. So, my dear students, so let me start first with the reading comprehension. So, we will be doing two reading comprehension. Okay, one will be very easy. The second one is little difficult, but you will be able to do that. You know? So, if you do these two, so you won't have any problem in the exam tomorrow. All right. So, okay. Let me share the window first with you. Wait. I'm little okay. Okay, so next is this. Okay, let me first share the tab and then okay class. Can you see the reading comprehension on your screen? Just say one or two student yes or no. Reading comprehension, is it visible? We, d'accord. So my dear students, first of all, we are going to do, this is a very easy one. All right. So I want you to read it. All right. So let me first read. You just pay attention on that, है ना, so that we can save time. All right. So the first, this is the reading comprehension. We call it comprehension écrite, which is reading comprehension. Okay. So lisez le texte et répondez aux questions. So read the text and answer or respond to the questions. All right. So this is a very basic reading comprehension. All right. Okay, so is it audible now? Let me again confirm. Am I audible? Just one person can give the confirmation. Okay, fine. Now I'm going to read and then I'll make you understand. And then after that, we will solve the question. And at the end, you have to give the answer. Okay. Okay. So the question, the reading comprehension starts with bonjour. Bonjour, you know, hi, hello, formal. Then je m'appelle Preeti Sharma. Je m'appelle Preeti Sharma, which means my name is Preeti Sharma. है ना? A which means and. J canj on, which means I am 15 years old. And then je suis Indian, which means I am Indian. Female, I am Indian. Mais which is but. J'habite à Paris avec ma famille depuis 3 ans, which means j'habite à Paris, I live in Paris. Avec which means with, है ना? Avec ma famille, with my family. Depuis 3 ans, depuis का meaning मैंने लिखा है since, and 3 ans which means 3 years. So I live or I have been living in Paris with my family since 3 years. Okay. Mon père, which means my father, Monsieur Sharma, a medecin. So my father's, what is the profession of my father here in the text? Is a doctor. Okay, dans un grand hôpital, है ना, in a big hospital. Okay, Parisien. Parisien is पैरिस में रह, पेरिस में जो लोग रहते हैं उसे पारिजियां कहते हैं, है ना. मेल हो तो पारिजियां, फीमेल हो तो पारिजियन. फॉर एग्जाम्पल जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्लीइट्स, है ना.
तो उसी तरीके से पेरिस में रहने वाले लोगों को हम पारिजियां कहते हैं. Ma mère, now continue. Ma mère, which means my mother. Ma mère, Madame Sharma. है ना, MME, which denotes Madame. This is the short form of Madame. So Madame Sharma, a professor. Professor the mathématiques dans the lycée. है ना. So my mother, Madame Sharma, is a professor or teacher of mathematics in a school, in a high school. Okay. Now continue the next paragraph. J'ai un petit frère. J'ai un petit frère. I have a small or a younger brother. है ना, जिसका नाम क्या है? His name is Rahul. Okay. Il a 12 ans. वो कितने साल का है? He is a 12 years old. Il est très intelligent. He is very intelligent. And moi which means me. Moi, j'aime beaucoup la musique et la danse. So me, I love very much, a lot, music and dance. Je joue du piano or je fais du piano. यहाँ पे je joue du piano is possible. Je fais du piano is also possible, which means I play piano. And je prends des cours. I take classes. Je prends des cours, which means I take classes. है ना? Okay. कौन सी क्लास लेता है वो? डांस क्लासिक, है ना, क्लासिकल डांस की क्लासेस लेता है. एंड राहुल लुई he which means Rahul prefer what he likes, what he prefers, sports, les sport. And il joue au football et au tennis. तो राहुल क्या प्ले करता है, क्या खेलता है? फुटबॉल एंड टेनिस. नाउ कंटिन्यू द थर्ड पैराग्राफ. à la maison which means at home. Nous parlons trois langues. So we speak three languages. है ना, at home we speak three languages. कौन सी language? Le français avec nos amis, which means French with our friends. And at school, Lindi which means Hindi language. Avec nos grands-parents, है ना, quand ils nous appellent, यानी कि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं तो जनरली वी स्पीक इन हिंदी. And l'anglais which means English, entre nous, है ना, dans la famille. So in family we speak English, है ना. So c'est très pratique. This is very practical. So this is the information about Preeti Sharma, है ना. So the text is about Preeti Sharma. You remember that. And Preeti Sharma की बात हो रही है. Now Preeti Sharma is talking about her father, her mother, her brother Rahul, है ना, or her grandparents, what language they speak, what is the profession of her father, what is the profession of her mother. So this text is basically about Preeti Sharma. ठीक है. Now I have a few questions. 10 questions है ना. I give you 2-3 minutes, or you just take 2-3 minutes, go through the reading comprehension once again. Then I will ask you question and then you have to answer. Okay, just take 3 minutes and read it silently. So now we are focusing on reading comprehension. So just discuss reading comprehension, and after this session I will start a grammar session. Okay, so there you can ask these grammar questions. All right. So after this session again I will start one more session, okay, which will be based on grammar. So now focus completely. I want your attention on reading comprehension.
Okay, so you have completed the reading, I hope. Now, let me ask you some questions. है ना? This will be like one word answer, but in your examination, so the question will be asked how to. I mean, you have to answer full sentence answer as we have discussed in the class. Okay, let me start the question first. Okay, the first question here on your screen for 1,000 rupees. It is a joke. I'm not going to pay you 1,000. Okay, so the first question is Como sapel la fee? Okay, there are four options: Preeti Sharma, Rahul Sharma, Madam Sharma, Preeti Rahul. Okay, tell me what would be the correct answer. Write in the chat box. El Sapel Preeti Sharma. Yes, this is the sentence you have to write in the exam, not one word answer, complete sentence. Let me choose the answer. Preeti Sharma. Okay, the audience, according to audience poll says we have to choose Preeti Sharma. Okay, now let's move to the next question for 2,000 rupees. Okay, so Kel Aj Atel. Okay, how old she is? Your answer, please. Your answer, please. ओके बट यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस आंसर जैसा कि श्रेया व्यास ने लिखा एल आ कैंज ऑन दैट इज द फुल सेंटेंस आंसर इन योर एग्जाम यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस आंसर एल आ कैंज ऑन ओके let me choose the second answer where 12 douze on, 15 on, 13 on, 6 on. So according to audience poll, it's 15 on. Okay. Next question. Next question is quelle est sa nationalité? What is her nationality? Française, Indian, Anglaise, Parisian. Yes, your answer please. For 5,000 rupees, for 3,000 rupees. बहुत ज़्यादा नहीं देना है पैसे. Elle s'appelle Canjon. Okay, elle est française. Elle est française or elle est indienne. Please read the text carefully. Uh, bonjour, je m'appelle Preeti Sharma. Je Canjon, je suis indienne. मैं j'habite à Paris, which means I am Indian, but I live in Paris. Okay, so what would be the correct answer? Please type. LA Indian. Okay, let me choose the answer. Français Indian. Okay, now we are moving to the fourth question for 4,000 rupees. Okay, the question is Où habite-t-elle? Where does she live? Où habite-t-elle? Where does she live? En Inde, à Londres, à Paris, à Mumbai. So where does she live? See the answer. Elle habite à Paris. Okay. Elle habite à Paris, à Paris, à Paris. Okay, almost your answer is à Paris, à Paris. Okay, so when you are writing El habite à Paris, then aake a is a preposition. So on the top, you have to give that accent. है ना accent? Okay, let me choose the answer à Paris. Okay, now move to the. So you 4,000 rupees का question हो गया. Now 5,000 rupees. All right. Okay, the fifth question is que fait son père? Que fait son père, which means what is the profession of her father? What does her father do? So the question is trying to know what does her father do. So il est professeur, he is professor. Il est médecin, he is a doctor. Il est dentiste, he is a dentist. Or il travaille dans un lycée, or he works in a high school. Okay, so your answer please. Okay, your answer il est médecin, il est médecin. You are saying if her father, Mr. Sharma, is a doctor. Okay, okay. Let me choose the answer. Il est médecin. Okay, il est médecin. Fine. Now move to the question number 6. The question number 6. Que fait sa mère? Que fait sa mère? Which means again the question is about the mother's profession. And what does her mother do? Now elle est médecin, she is a doctor. Elle est professeur de français, she is a French professor. Elle est professeur de mathématiques, she is a mathematics professor. Or elle ne travaille pas, or she doesn't work. What would be your answer, please, audience? Elle est professeur. Elle est professor. Okay, majority of the students are replying. Elle est professor. Let me choose the answer. Elle est professor, but elle est professor of what? Mathematics, French, what? Elle est professeur de mathématiques. Madhav has responded. Elle est professor. Professor की स्पेलिंग में सिंगल एफ है. Okay.
Double S ni, don't make mistakes, otherwise you are going to lose marks. Okay, LA Professor the Mathematic, let me choose questions for 6,000 rupees. Okay, next question. Como s'appelle son frère et quel âge a-t-elle? Which means what is the name of her brother and how old he is. है ना? Rahul 10 years, Dizon, Rahul 12 years, Raj 12 years, Rahul 15 years old. What would be the correct answer? Rahul 12 ans. You are saying Rahul 12 ans, where you can justify j'aime beaucoup la musique. Okay, Rahul. Okay, il a 12 ans. Okay, so you are writing Rahul 12 ans. Okay, il s'appelle. देखो साहिबा सिंह ने लिखा है il s'appelle 12 स्पेलिंग 12 की रॉन्ग है, प्लीज करेक्ट. Il s'appelle Rahul. Okay, il s'appelle Rahul. That is the correct answer. And then il a 12 ans. है ना? Il s'appelle Rahul. Il a 12 ans. Yes, Madhav has written il s'appelle Rahul. Il a 12 ans. Yes, correct answer. Correct answer. Good. Let me select il s'appelle Rahul. Okay, Rahul and 12 ans. All right. Now move to the question number 8 for 8,000 rupees. All right. Okay. You can imagine just 8,000 rupees. I'm not going to pay you. Okay. Now the next question is Kesko Preeti aim? Kesko Preeti aim? What does Preeti likes? Preeti को क्या पसंद है? Now you see, moi j'aime beaucoup la musique et la danse. Okay. So now you answer le sport, la musique et la danse, les mathématiques, le football. Your answer, audience. Elle aime la musique et la danse. Huh? La danse. All right. Elle aime la musique et la danse. Okay, let me choose the answer. La musique et la danse. Okay, question number 8 completed. Now, question number 9. Keska Rahul aim? What does Rahul like? राहुल को क्या पसंद है? राहुल, you check your answer and write. Rahul, किसको Rahul aim? Okay, so your answer is il Rahul aim les sport, Rahul or il aim les sport. Okay, let me select. We will verify answer later. Okay, les sport. Okay. Next, last question for 10 lakh rupees. Okay, so see that 9,000 से 10 lakh. Imagine करने में क्या जाता है, right? So, okay. लास्ट क्वेश्चन. quelle langue parle-t-il à la maison? घर पे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? घर पे at home which language they speak? ओके, सल्मो फ्रांसे. सल्मो फ्रांसे का मतलब होता है ओनली फ्रेंच. ओके, द सेकंड इज फ्रांसे et anglais, फ्रेंच एंड इंग्लिश. फ्रांसे हिंदी anglais, फ्रेंच हिंदी इंग्लिश, हिंदी et anglais. Now you read the text again. This is little confusing. Please read. I think it is in the last paragraph. À la maison nous parlons trois langues. है ना? ये देख लीजिए कौन कौन सा. So please write your answer carefully. And if your answer is wrong, you will get zero rupees. Okay? From 9,000 to 0 rupees. And if your answer is right, you will get 1 million, 10 lakh. Okay? Okay, français, hindi, anglais. Okay, fine. Français, hindi, anglais. Okay, now let me choose français, hindi, anglais. Okay, dear students, now I'm going to click this button, vérifier les réponses, verify responses, and I will click this response and you will see how much did you score. Okay, now दिल थाम के बैठिए, result आने वाला है, right? Okay, so let me verify. धक 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 वेरीफाई. वाला, क्या बात है, एक्सेलेंट, 10 आउट ऑफ 10. वंडरफुल. और आपको मुबारक है 10 लाख रुपीस जीतने के लिए. ओके,
So excellent work. You did a great job. You really did a great job. Okay, bravo, excellent. Okay, formidable. Okay, great. You should clap that you all have done a really good job. So the first reading comprehension we have finished. Now we are moving to the next reading comprehension. Okay, which I have prepared on PPT. Okay, let me share that screen. I am just going to close this screen. So I hope you have done this. It's just be cool. Don't take so much stress, है ना? जितना आप cool रहोगे उतनी आसानी से paper you can solve. Okay, now I'm going to share the next screen. Just wait. Okay, now I'm going to share the screen with you. Just a second. I have to just wait little. एक second. I'm little having some problem in sharing. Okay, now it's here. Yes. Okay, so the screen is visible to you, my dear students. Just give me a confirmation. Still, can you clarify it? Okay, it's here. Yes, now the screen. This is the second, and in this, we are going to discuss more questions. And this is the last reading comprehension. After that, we will start grammar session, which is going to be very important. Okay, so let me first read the comprehension. Okay, so lisez le texte et répondez aux questions suivantes. Read the text and answer the following questions. Okay, so bonjour, je m'appelle Rohan Verma, है ना? Bonjour, hi, hello, je m'appelle Rohan Verma. My name is Rohan Verma. J'ai 20 ans, which means I am 20 years old. Je suis indien, I am Indian. J'habite avec ma famille à Noida, en Inde. So I live with my family in Noida, Anand, in India. Je parle Hindi, anglais. I speak Hindi, English and English. Et j'apprends aussi le français à l'université, which means I speak Hindi and English. Okay, and I am also learning French at university. Pasca, which means because. Pasca, j'aime beaucoup les langues, which means I love very much languages. Je suis étudiant en commerce. I am a commerce student. Okay. Dans ma famille, which means in my family, है ना? Il y a mon père. There is my father. Mon père is my father. Ma mère is my mother. Ma sœur is my sister. Mon père, mon père Rajesh. Mon père s'appelle Rajesh Verma. So my father's name is Rajesh Verma. And a which means and, which I have already discussed in the previous reading comprehension. It means and. Il est ingénieur, he is engineer. Dans une grande entreprise, grande का मतलब बड़ा होता है, right? Something big. So my father is, he is an engineer.
है ना, in a very big company. Okay, ma mère s'appelle Sunita Verma. So my mother's name is Sunita Verma. Elle est professeur d'anglais. So she is a English professor, English teacher. Dans une école, dans का मतलब in होता है, right? Dans une école, in a school. Okay. Ma sœur s'appelle Priya. So my sister's name is Priya. एल आ सेजों, तो प्रिया की एज क्या है? प्रिया इज अ सिस्टर ऑफ रोहन वर्मा, उसकी एज क्या है? 16, है ना। एल आ सेजों. Now, elle est lycéenne. Okay, she is a high school student. Moi, j'aime jouer au football. Okay, I love to play football, écouter de la musique, and I love to listen music, et regarder le cinéma. And I love to watch cinema also. Okay, now, tandis que ma sœur aime faire du dessin. So, जबकि मेरी sister जो है, what she likes drawing, manger du chocolat, she likes eating chocolate, à la maison, at home, nous parlons surtout का मतलब mostly और mainly, है ना, particularly, है ना. So nous parlons surtout हिंदी और हिंदी. फ्रेंच वाले कहते हैं हिंदी because they do not pronounce her sound, but in India we have a ha sound, we can also pronounce Hindi or Hindi, both are correct. Mais, but parfois nous utilisons aussi l'anglais. So some at home we speak mainly Hindi, but sometimes we also use English. Okay, now so this is the text about Rohan Sharma, है ना. अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय इन द टेक्स्ट, देन आंसर शुड बी रोहन शर्मा. कई स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये वाली कॉपी करते हैं, जमापेल रोहन वर्मा. इफ यू राइट जमापेल रोहन वर्मा, तो योर आंसर विल बी रॉन्ग, बिकॉज क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय इन द टेक्स्ट, है ना. तो इस मीन्स किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना, तो आपको कहना हिज नेम इज रोहन शर्मा. अगर आपने लिखा जमापेल रोहन शर्मा, इसका मतलब है कि आप अपना नाम बता रहे हो, दैट इज रॉन्ग, है ना. इफ आई आस्क यू कोमो तुतापेल व्हाट इज योर नेम, देन यू हैव टू से जमापेल. लेकिन यहाँ पे आपकी नाम नहीं पूछी जा रही, यहाँ पे पूछी जा रही है आपने, यू हैव रेड अ टेक्स्ट, यू हैव रेड अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन राहुल वर्मा के बारे में है ना, किसी बंदा है, उसका नाम राहुल वर्मा. ये टेक्स्ट उसके बारे में, तो क्वेश्चन भी उसी के बारे में, राइट. उसके बारे में, उसके फादर, उसके मदर, उसकी सिस्टर, है ना, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, प्रोफेशन, एड्रेस, एज, ये सारी बातें राहुल से रिलेटेड, रोहन वर्मा है, रोहन वर्मा से रिलेटेड. तो विच मीन्स किसी थर्ड पर्सन का आंसर देना है. हिज नेम इज, हिज फादर्स प्रोफेशन, ये सारा आंसर करना. कई स्टूडेंट अपना ही नाम लिख देते हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है, they just copy and paste, you will get 0 for that. ठीक है, so you don't have to do that. जैसे आपने प्रीवियस पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा, उसी तरीके से ये करा. नाउ लेट मी शो यू द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू आंसर. शो यू द क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आई गिव यू 2 minutes. या somebody साहिबा सिंह has written इल सापेल. सापेल में स्पेलिंग देख लेना साहिबा, एस अपोस्ट्रोफ ए डबल पी ई डबल एल ई. ओके, रोहन वर्मा. Because if you make spelling mistakes, you will lose marks. Just finish the text in 2 minutes and we'll start the question and then answer. You know, I came from the university, I was preparing all these things. I came from the university at 8 p.m. and then I prepared my dinner. I had dinner, then again from 9 a.m. No, sorry, 9 a.m. 9 p.m. I am started teaching you. I'm doing a revision class. है ना, tips and tricks I'm giving you. I am very much dedicated for my students. Okay, so now let me start the answer also. Okay, question and answer. Okay,
Okay, now you can see and read these questions. I hope these questions are visible to you. Yes, these questions are visible. Okay. Yes, Madhav has written Le garçon s'appelle A Rohan Verma. No, no, you don't need to say A. You just say Le garçon s'appelle Rohan Verma, or you can say Il s'appelle Rohan Verma. The best answer would be Il s'appelle Rohan Verma. Finish. Full marks. Okay. So, como s'appelle le garçon? The question is, como s'appelle le garçon? What is the boy's name? तो उसका नाम क्या है? तो क्या होना चाहिए आंसर? Il s'appelle. है ना? Il s'appelle. Then you are saying Rohan Verma. ठीक है? Okay, the second question is question number B. Kel Aj Atil, है ना? How old is he? So what would be the answer? बताओ. The second question. Il a 20 ans. Okay, you are saying il a 20 ans. We will verify the answer after that, after discussing the question. Okay, you are saying il a 20 ans, VINGTANS. ठीक है. और फिर फुल स्टॉप भी लगाना है. हाँ, फुल स्टॉप. Full stop has a meaning in a sentence. I want perfect answer from each one of you. Okay. Now question number C. La question numéro C. Alors, c'est quoi? Quelle est sa nationalité? Voilà. La question c'est, il s'agit de la nationalité, है ना? La question veut savoir quelle est la nationalité de Rohan, है ना? Rohan Verma. Okay, so quelle est sa nationalité? What is his nationality? Okay, you are saying il est indien. Okay, il est indien. Sir, the way you are, don't worry. Just do your best and your answer will be all right. Just be cool, relax, and enjoy the learning process. Okay, so quelle est sa nationalité? Please, il est indien, il est indien. Okay, you are saying il est indien. We will verify the answer later. Okay, now D number. Où habite-t-il? Où habite-t-il? La question c'est où habite-t-il? Where does he live? Il habite à Noida. आ के ऊपर में एक्सेंट देना है. Accent. Okay, il habite à Noida. Okay, your answer is il habite à Noida. ठीक है? Okay, now question number E. Quelle langue parle-t-il? Which language does he speak? Yes. Which language does he speak? Yes, your answer. I am waiting for your answer, my dear students. Il parle hindi et anglais. ठीक है? Il parle hindi et anglais. Madhav has written il parle hindi et anglais. Okay. ये ईशिका शौकीन नामक स्टूडेंट सॉरी. ओ नो. सो व्हाट इज ओ नो? Il parle hindi et anglais. Okay, fine. ठीक है? We will verify. Next question is uh, next is long हो गया. Quelle est sa profession? Quelle est sa profession? Again, this is question on profession. Now tell me what is the profession of Rohan Verma? Quelle est sa profession? सर वो रो रही थी. ओके, प्लीज सेंड हर टिश्यू पेपर. है ना? रोने वाली बात नहीं है, इंजॉय करने वाली बात है. लैंग्वेज इज ऑल अबाउट लर्निंग, इंजॉइंग. ठीक है? द स्टूडेंट हु enjoy the learning process, they really improve their language. Believe me, when I was a student, still I am a student and I enjoy. You must see me in the class, how much do I enjoy, right, while teaching. So I used to enjoy a lot with my professors in my class. I used to take participate in every activity in the class. Okay, so I enjoy. So the students who enjoy, they learn very fast. Okay, so your answer is il est étudiant en commerce. Okay, fine, il est étudiant en commerce. ठीक है?
Now the next question is quelle est la profession de son père? Okay, now quelle est la profession de son père? Ne sois pas triste. Yes, don't be sad. Yes, come on. Quelle est la profession de son père? Yes, what is the profession of his father? Yes, anyone remember? Or should I show you the text? Il est ingénieur. Okay. Madhav has written il est ingénieur. All right. Now, next H question number H. Quelle est la profession de sa mère? है ना? Quelle est la profession de sa mère? What is his mother's profession? Okay. Yes. Mother's profession. Father, you have responded. Il est ingénieur. Mother's profession. एल ए प्रोफेसर. प्रोफेसर में सिंगल एफ है, डबल एफ नहीं है, राइट? और इट इज अबाउट मदर्स प्रोफेशन. मदर इज प्रोफेसर, तो लास्ट में एक्स्ट्रा ई है, राइट? PROFE डबल एस EUR एंड देन ई. Okay, LA Professor Dongle. Madhav is very active. I can see he is writing very perfect answer without any mistake. Okay, many of you. Yeah, in fact, many of you. LA Professor. Yes, yes. Vansh Mittal has also mentioned in the bracket. Okay, but when you are sure, then you don't need to mention the bracket. You can directly write PROFE double S. You have written single S, Vansh. And double S and then EURE. और स्नेहा पॉल ने लिखा है SSURE. दैट इज रॉन्ग स्पेलिंग, यू नहीं है वहां पे, EURE है ना. So these kind of spelling you have to avoid. Mostly spellings are there in the reading comprehension also, in the question also. Just you have to follow the structure. Okay, now question number I. किसका रोहन aim? What does Rohan like? Yes, your answer. रोहन को क्या पसंद है? यस, रोहन को क्या पसंद है? सर इट वुड बी दोंगले. हाँ ठीक है, दोंगले कर दो आप, मतलब प्रोफेसर दोंगले, इंग्लिश प्रोफेसर. ओके, नाउ आंसर प्लीज. किसका राहुल एम? Il aime jouer au football, écouter de la musique et regarder le cinéma. This is the answer by Mr. Ramadhav. Okay. Others also please type your answer. Il aime jouer au foot. और नहीं, AUR नहीं, AU है ना. So write the correct sentence. Yeah. Okay, so almost you are there. Okay, now the last question is quelle langue parle-t-on à la maison? यहाँ पे मैंने ON मेंशन किया है. ON का मतलब होता है नू, नू लाइक वी, है ना. सो O इज अ न्यूट्रल जेंडर विच मीन्स वन, है ना. लाइक वी से ना वन शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना. वन शुड, तो वन में मेल फीमेल ये सारे आते हैं. फ्रेंच में ON इज इक्वल टू लाइक वी, है ना. वी के लिए जो हम यूज करते हैं नू, सो ये मीनिंग बेसिकली वही देता है. quelle langue parle-t-on, बट इट विल टेक द कॉन्जुगेशन ऑफ इल सिंगुलर एल सिंगुलर, है ना. But it is like one or it is like we. Okay, so which language they speak at home? ठीक है, now tell me which language. Il parle hindi et anglais. Yes, प्रियांशी अग्रवाल, क्या बात है. आला मेजों, il parle हिंदी या anglais. क्या मास्टर स्ट्रोक है आप लोगों का. आज तो सब फॉर्म में लग रहे हैं. आज तो कल तो एग्जाम बिल्कुल सर झंडे गाड़ के आने हैं फ्रेंच के. Okay, fine. So let me verify the answer. Okay, il parle hindi anglais. Il parle hindi anglais. Good, good, good. Very good. है ना, almost.
सर फुल, ओ माय गॉड, साफ फुल कॉन्फिडेंस, एकदम फुल कॉन्फिडेंस। जब सर इतने कॉन्फिडेंस में तो उनके स्टूडेंट का क्या ही होगा, है ना? ओके, सो लेट मी वेरीफाई योर आंसर। वेयर इज माय पीपीटी? Okay, we will discuss the answer also and the structure. Okay, now here is your answer. Okay, the first question was what is the name of the boy, है ना? तो आंसर इज इल सापेल रोहन वर्मा, है ना? हिज नेम इज रोहन वर्मा, इल सापेल रोहन वर्मा. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. Okay, and second question was what about the age of that person. तो देखिए, this is an example. So in your exam, question can be different. I mean, there will be a question on age, there will be question on name, profession, है ना? But why I am teaching you this session, why I am taking this session, you should know the structure. मैंने, दिस इज माई एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट दे डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, द स्ट्रक्चर, है ना, हाउ टू आंसर. व्हाट दे डू, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, व्हाट वाज द क्वेश्चन, कोमो सापेल लो गार्सों डॉन ला टेक्स्ट, है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय. तो आंसर क्या था, जमापेल, टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ था, जमापेल रोहन वर्मा. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जमापेल रोहन वर्मा दे टेक इट एंड दे राइट इन द आंसर, एंड दैट इज रॉन्ग. जमापेल रोहन वर्मा का मतलब है, मैं पूछ रहा हूं उसका नाम क्या है, आप कह रहे हो मेरा नाम क्या है. गॉट इट? इफ यू राइट जमापेल, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है, इफ यू टेक दैट एंड कॉपी एंड पेस्ट, देन दैट वुड बी रॉन्ग आंसर ना. उसमें तो लिखा हुआ है जमापेल रोहन वर्मा, राइट? एंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, है ना, कोमो सापेल लो गार्सों, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय. ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारा नाम क्या है. गॉट इट? तो ये मिस्टेक मत करना, इसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं, और मैं नहीं काटना चाहता. मैं, आई टोल्ड यू आई एम अ ट्रेनर, आई विल ट्रेन यू, है ना. सो दिस इज योर ट्रेनिंग सेशन, है ना. सो इन एग्जाम यू परफॉर्म बेटर. ठीक है, सो इल सापेल रोहन वर्मा. नाउ एज, अब एज मैंने पूछा व्हाट इज द एज ऑफ द ऑफ रोहन वर्मा, व्हाट इज द एज ऑफ रोहन वर्मा. तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ था, जे वेंतों, विच मीन्स आई एम 18 ईयर्स ओल्ड. कुछ स्टूडेंट उसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, दैट इज अ रॉन्ग आंसर. अब मैं आपकी एज नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ रोहन वर्मा की एज जो टेक्स्ट में है. तो उसको इल से हम करेंगे, इल आ वेंतों, है ना, ही इज 20 ईयर्स ओल्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, इल ए एंदिया, व्हाट इज हिज नेशनलिटी. क्वेश्चन था व्हाट इज हिज नेशनलिटी. सो आंसर इज इल ए एंदिया, दिस इज द करेक्ट आंसर. ये मत लिख दीजिएगा जसवी एंदिया, जसवी एंदिया विच मीन्स आई एम इंडियन. सो आपका आंसर जीरो हो जाएगा, मतलब मार्क्स जीरो हो जाएंगे और आंसर विल बी रॉन्ग. नाउ क्वेश्चन डी था, वेयर डज ही लिव, उ आबितिल, है ना. तो कई लोगों ने सही आंसर दिया था, इल आबित आ नोएडा ओनैंद, ही लिव्स इन नोएडा इन इंडिया. ठीक है, करेक्ट आंसर. इल पार्ल हिंदी, विच लैंग्वेज डज ही स्पीक. Il parle Hindi, anglais. He speaks Hindi and English. And then un peu de français. वो un peu de का मतलब होता है little bit. वो मैंने यहाँ क्यों ऐड करा, क्योंकि उसमें क्या लिखा था, j'apprends aussi le français, which means I am also learning French at university, है ना. Because I love, ये लिखा हुआ था ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. तो लर्निंग फ्रेंच विच मीन्स कि वो थोड़ा बहुत अभी जानता है, ठीक है ना, बट उसने हिंदी इंग्लिश ही अच्छे से जानता है. इल पार्ले हिंदी ओंगले, ही स्पीक्स हिंदी इंग्लिश, ए अम्पो दो फ्रांसे लिटिल बिट फ्रेंच, है ना, थोड़ा 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 थोड़ा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इल ए एतुदियों, व्हाट वाज द क्वेश्चन, केल ए ला प्रोफेसियों, है ना, केल ए सा प्रोफेसियों, ये था क्वेश्चन ना, व्हाट इज हिज प्रोफेशन. तो कई स्टूडेंट ने आंसर दिया था एतुदियों ओ कॉमर्स. यस, करेक्ट आंसर, इल ए एतुदियों ओ कॉमर्स, ही इज अ कॉमर्स स्टूडेंट. नंबर जी, son père est ingénieur. So what was the question, what is the profession, what is his father's profession, है ना. quelle est la profession de son père, है ना, what is his father's profession, ये था.
तो आप उसको दो तरीके से आंसर कर सकते हो। एक तो सो पैर यानी कि हिज फादर ए इंजीनियर, तो हिज फादर इज इंजीनियर। ठीक है, देखिए मैंने ट्रांसलेशन भी दिया है, हिज फादर इज एन इंजीनियर, ये हो गया। या तो आप हिज फादर को आप इल से रिप्लेस कर सकते हो, इल ए इंजीनियर, है ना, ही इज एन इंजीनियर, ये भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, विच एवर यू कंफर्टेबल फील कंफर्टेबल यू कैन राइट द आंसर। Okay, I have given you both the options. नंबर एच, केले ला प्रोफेसियों दो स मैर, है ना, ये था उसके मदर के प्रोफेशन के बारे में। समैर ए प्रोफेसर दोंगले, कई लोगों ने आंसर दिया प्रोफेसर दोंगले। सो यू कैन राइट समैर ए प्रोफेसर दोंगले का मतलब हो गया हर हिज मदर इज इंग्लिश प्रोफेसर। ठीक है, और यू कैन, अब हिज मदर को आप एल से भी रिप्लेस कर सकते हो, है ना, एल ए प्रोफेसर दोंगले, शी इज अ इंग्लिश प्रोफेसर। ठीक है, इस तरीके से यू कैन आंसर। और कोई है इसमें? हाँ, एच हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन लगता रह गया है क्या, लेट मी सी। एच, एक सेकेंड। अच्छा, जे वाला वो आंसर रह गया, बट एनीवे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, एक सेकेंड। हाँ, जे एच तक हमने कर लिया था, केलेला प्रोफेसियों द समैर, व्हाट इज हर मदर्स प्रोफेशन, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये करना था, मिनट, लेट मी copy this and I'll put it in the answer. Wait, ये था ना हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर अभी करेंगे हम, एक सेकेंड। हाँ, सो ये मैंने पेस्ट कर दिया, वो रह गया था क्वेश्चन। सो किसका रोहन एम, है ना, किसका रोहन एम, व्हाट डज रोहन लाइक, तो क्या आंसर था उसका, ही इल एम जुए ओ फुटबॉल, है ना, ये सारे आंसर्स आपने लिखे थे। ठीक है, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कहाँ गया वो पीपीटी, यस, ये टेक्स्ट था, रोहन क्या पसंद करता है, तो यहाँ पे आंसर था je suis étudiant au commerce, il y a mon père and ma mère s'appelle ma, ओके, जैम जुए, ओके, मुआ जैम जुए ओ फुटबॉल, देखिए यहाँ पे आंसर है उसका, जैम जुए ओ फुटबॉल, écoutez dans la musique et regardez le cinéma, है ना, रोहन की बात हो रही है, regardez le cinéma, ये था। तो इसका आंसर आप लिखोगे यहाँ पे, जैम नहीं लिखोगे, इल लिखना है, इल एम जुए ओ फुटबॉल, écoutez dans la musique et regardez le cinéma। ठीक है, नाउ quelle langue parle-t-on à la maison, घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग, अगेन यू सी द आंसर, घर à la maison nous parlons surtout हिंदी में, parfois nous utilisons aussi l'anglais, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दे स्पीक एट होम, है ना। तो लास्ट का आंसर क्या लिखोगे आप, वेरी सिंपल, यू कैन राइट पार्ल इल पार्ल हिंदी ए ओंगले, है ना, ओंगले आला मेजों, आला मेजों, ठीक है, इल पार्ल हिंदी ए ओंगले आला मेजों, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, आई कर लिया हमने, जे कर लिया, ये सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये कंप्लीट हो गया बिल्कुल इसी तरीके से, दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर, है ना, टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वी हैव कंप्लीटेड, है ना, एंड यू हैव ऑल्सो प्रैक्टिस्ड माई प्रीवियस एक्सरसाइजेज ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, on this channel also. So now we have completed. So do you have any doubt, any question on the reading comprehension? You can type your question in the chat box. Then we will start our grammar session after a break at 10:30.
we will start grammar practice. Tab tak you go through it, all the reading, everything, just revise it. And between 30 minutes answer of reading comprehension, do we write age in numbers? हाँ, you can write in numbers or in words, no problem. ठीक है, in reading comprehension either you write in words or numbers, the sentence should be correct. For example, il a canj on canj, you can write QUINJD, full marks. Il a 15 ANS, full marks. Okay, so you can take break because मैंने अगला सेशन शेड्यूल किया है 10:30 PM का. All right, and today is 8 September, 10:30 PM पे we will start the grammar session, है ना, where we will practice grammar topics. तब तक you go through the grammar topics in your notebook. जो भी notebook में हमने पढ़ा है, please go through that notes and okay, and we will practice. है ना, अगर आपने कुछ खाया नहीं है, go get some water, eat something, है ना. If you want to listen music, थोड़ा mind refresh करो अच्छे से. All right, and we will meet at 10:30 exactly. ठीक है, which is already scheduled, you must see on this channel. ठीक है. Okay, sir, would be the English meaning of the question? No, there will be nothing in English. I told you in classroom also, there will be nothing in English. That is why I have given you here everything in English, because I am training you. Okay, because this paper is a French paper and everything will be in French and you must know French. Okay, now you don't need English because we are giving you, I'm giving you everything here in English. So this is a training session. Just get training, be ready and perform well in the examination. ठीक है. So we are meeting at 10:30 PM. Be ready, अच्छे से fresh हो जाओ because वो grammar topic है very important. ठीक है. Okay. तो ठीक है, merci beaucoup, है ना. And okay, so thank you for choosing FrenchPro Global. So this exercise is very useful for DELF A1 examination, for anyone who is learning French for the first time, A1 level students. ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, विल सी इन 30 minutes at 10:30. सोना नहीं है, बोन नुई नहीं, अभी आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप. ओके, I'm not going to sleep. So don't say bon nuit. We are meeting just today, just after 30 minutes. Okay. I am ending the session. We'll start at 10:30. क्या बात है, मैरी क्रिसमस लिख रहे हैं. दिस इज क्रिसमस. क्या हो गया है, होश में नहीं है लगता है. विशेष हैज रिटन मैरी क्रिसमस. क्रिसमस दिसंबर में आता है, अभी आप लिख रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर. क्या हो गया है. गो एंड गेट सम वाटर माय डियर स्टूडेंट्स. रिफ्रेशमेंट के बाद मिलते हैं. Write your comments also about the session. Thank you, everyone. Yes, you can write as many. Okay. Yes, emojis and everything. If you like the session, you like my channel, you subscribe my channel. Okay, I will be giving you so many exercises. I do have many interactive exercises on all the grammar topics. So you don't need to worry. If I'm here, you don't need to worry for your examination, DELF examination, school examination, university examination. I'll be giving you training. Just be on my channel and support. It takes so much hard work, time, energy.
है ना.